Hi, this is Mrs. Seema Yashwant Pai from Nirmal classes. Today we are going to take figure of speech fourth part, that is tautology. Okay. Now let us first see what is figure of speech. Figure of speech is a word or phrase used in a speech to make it more impressive, expressive. It is always used in figurative speech. It possesses a separate meaning than from its literal meaning. It can be used in metaphor, simile that I have already sent you. It can be used in alliteration, repetition. I have also sent that video. And it can also be used in antithesis and tautology. Antithesis I have sent you. Today I am sending you tautology. So, what is figure of speech? It emphasizes, it clarifies, it embellishes the both spoken and written language, forming an integral part of language. They are always used in everyday speech. For example, एक लड़का अपना बिलवड को बोलता है, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा. अच्छा भाई साहब, आपने कौन सा रॉकेट बुक किया है? अगर आप सचमुच का जा रहे हो तो हमारे लिए भी थोड़ा सितारे लाइए ना, हमें ऑफिस रूम सजाना है. क्या आप ला सकते हो? नहीं, वो फिगर ऑफ स्पीच में बात कर रहे हैं. या फिर आपके इसमें उतना ताकत है तो हमारा जम्बुल का जाट में बहुत जम्बुल हुआ है, थोड़ा तोड़ के नीचे लाइए ना. ला सकते हैं क्या वो? नहीं, वो फिगर ऑफ स्पीच में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ टुडे लेट्स स्टडी tautology. So our today's topic is tautology. In Hindi we call it punarukti. When two words or phrases in a sentence have same meaning, then the figure of speech is called tautology. अभी कल मैंने सिखाया, पार्ट थर्ड में सिखाया आपको एंटीथेसिस. उधर क्या था? मीनिंग ऑपोजिट वर्ड्स. अभी ऑपोजिट वर्ड्स नहीं. See, when two words or phrases in a sentence have same meaning, then the figure of speech is called tautology. दोनों का भी मीनिंग सेम रहना मांगता है. For example, the Taj was grand, it was beautiful. See, grand and beautiful. Both words have same meaning. बरोबर सुन के लीजिए. जब दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम रहता है तो उसको ही टोटोलॉजी बोलते हैं. सेकेंड सेंटेंस, इट वॉज ए कंटिन्यूअस अनएंडिंग स्टोरी. कंटिन्यूअस, अनएंडिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टोटोलॉजी. नाउ थर्ड वन, बट वी हैव फीट टू स्केल एंड क्लाइंब. स्केल and climb, both have same meaning. That's why it is known as tautology. Born in a bleak dark home. Bleak and dark have the same meaning. That is why it is known as tautology. दिमाग में डालो, same meaning है तो tautology. Opposite words है तो antithesis. Sing of filth and dirt. It is filth and dirt have same meaning. That's why it is known as tautology. At some old ancient inn, old and ancient have the same meaning. That's why it is known as tautology. Now see, sometimes in a sentence there may be needless repetition of an idea, needless repetition, and it is also fault. We should not use like that, and that is known as funny tautology. I shall explain you. A beginner who has just started. Is it necessary to say the beginner who has just started? Is it necessary? No. They arrived one after one in succession. Is it necessary to say succession? नहीं. जब वो वन आफ्टर वन बोलते वक्त मीनिंग मालूम पड़ा, फिर सक्सेशन लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं. इसको बोलते हैं फनी टोटोलॉजी, एंड इट इज टोटली रॉन्ग टू टॉक लाइक दैट. इट वॉज एडिक्वेट इनफ.
जब आप एडिक्वेट बोलते हैं ठीक है, इनफ बोलने की जरूरत है क्या? नो, नीडलेस रिपीटिशन. टू बी और नॉट टू बी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इन माई ओपिनियन, आई थिंक, जब आपने लिखा है इन माई ओपिनियन, फिर आई थिंक लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेम मीनिंग, लेकिन जब आप फर्स्ट लिखते हैं फॉरमोस्ट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. यू शुड नॉट राइट क्लोज प्रॉक्सिमिटी. क्लोज एंड प्रॉक्सिमिटी, क्लोज जब लिखा, प्रॉक्सिमिटी लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ हियर सी, आई पर्सनली मेड दिस कार्ड फॉर यू विद माई हैंड. पर्सनली आपने लिखा, फिर विद माई हैंड्स लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. फनी टोटोलॉजी. द टीचर असिस्टेड मी by helping me to complete the problem in maths. The teacher assisted me. फिर उसके बाद helping me लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. These are called funny tautology. Now this is for college students, especially English literature students. Listen to me. Abraham Lincoln says in his second inaugural speech, with malice towards none and charity for all. Malice towards none, charity for all. Both mean the same. Then, I went to live when I am alive. George says. I want to live when I am alive. क्या बोलता है? मुझे जिंदा रहने का जब मैं जिंदा था. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. बॉन जॉर्ज सेज, वो सब लोग जिंदा रहते हैं. आई वॉन्ट टू लिव व्हेन आई एम अलाइव. सो दिस इज ऑल्सो टोटोलॉजी. अलाउ माई सेल्फ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ऑस्टिन पावर सेज. You may know who is Austin Power. English literature students really know it. Who is Austin Power, sir? He says, allow myself to introduce myself. Tautology कैसे यूज किया है देखिए, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स नोट इट. Okay, when I was a student of English literature in my college, my English literature teacher used to say, making more use of tautology make you appear foolish. Really true. Think over it. Okay. Now I shall take tautology from 9th standard and 10th standard. Okay, 9th and 10th standard students, listen here carefully. His young heart and happy and well content. Now see, this is taken from the poem Somebody's Mother, written by Mary Dubrand. Here happy and well content have the same meaning. Now second poem, the poem's name is Tansen, Remote and Far Away, written by Hazrat Inayat Khan. Here remote and far away have the both same meanings. Now 10th standard, now I shall take two lines from 10th standard poems. Life seems useless and worthless without it. It is taken from the poem Will to Win and written by Burton Brally. Useless and worthless have the same meaning. That is why it is known as tautology. In wondrous merry mood. Poem is taken from this sentence is taken from the poem The Height of Ridiculous, written by Oliver Wendell Holmes. Wondrous and merry both have same meaning. That is why it is known as tautology. Now, let us clear it through some Hindi या Marathi songs. Okay. Now see, our first song is that मजट यमला पगला दीवाना. Now see, Dharmendra says, पगला दीवाना. Both have same meaning. That is why it is known as tautology. Now let's go to the second poem. Our second poem is क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है. अभी देखिए,
फिरोज खान हेमा मालिनी को बोलते हैं क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, दोनों का मीनिंग सेम है। फिर हेमा मालिनी कहती है फिर से कहो, कहते रहो, दोनों का भी मीनिंग सेम है। क्या बार बार कहने से कोई और ज्यादा सुंदर दिखने लगता है? नहीं, उसको फिगर ऑफ स्पीच में गाने का है। लेट अस गो टू द थर्ड सॉन्ग। नाउ आवर थर्ड सॉन्ग। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। अभी देखो, जिंदगी बंदगी both have same meaning. Okay, now let's go to the fourth song. Our fourth song is बोले कंगना बोले चूड़िया. Now कंगना and चूड़िया both have same meaning. That's why it is known as tautology. Then let's go to the fifth song. Now our fifth song is Marathi bhajan, Marathi abang. गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो. अभी देखो, गजानना गणराया both have same meaning. That is why it is known as tautology. बरोबर ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस में दो वर्ड्स सेम मीनिंग का है तो ये गाना आप याद रख सकते हैं, गजानना गणराया both have same meaning. Okay, now let's go to the next song. Now our sixth song. विठो माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीची मूर्ती विठोबाची. अभी देखो, विठो माऊली विठोबा both have same meaning. That is why it is known as tautology. Okay, so today our fourth part on figure of speech, that is tautology, is finished. Our next part is personification. And if you like this lesson, please subscribe my channel. Until then, bye.